Did you know the average salary of an MBA grad in the USA is around $150,000, and in UK it's around $130,000, and in Canada it's around $110,000. Well, did you know the average salary of a MEM grad is $120,000, and this course comes with almost half the cost of an MBA. So if you do the math, the ROI of an MEM degree is way more than an MBA. Bro, you can't claim it like this, यार. और भाई क्या फायदा ऐसी डिग्री और ROI का जिसके लिए 3 to 5 years का वर्क एक्स चाहिए हो? भाई फ्रेश ग्रेजुएट्स का क्या होगा? पहली बात तो ये है कि MBA graduates with prior work experience tend to command higher salaries and have better job opportunities. उसके अलावा भाई कितने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं MBA प्रोग्राम में जिसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज तो लगती ही है. So in that kind of situation आप अपने एक्सपीरियंस को अप्लाई करके बेटर आउटपुट दे सकते हो. भाई तुझे क्या ही पता है यार उसके लिए. भाई तू मेरे साथ बहस मत कर, तेरे को पता है. चलो. Are you also confused between deciding which degree to pursue between MBA or an MEM? Well, both the degrees provide incredible opportunities, but your decision should align with your goals and interests. Well, hello everyone. My name is Suraj. And my name is Arsalan. And in today's video, we will be discussing some key insights to help you decide which degree to pursue between MBA and MEM. And our decisions will be based on educational background, popular careers, salaries, recruiters, top schools and entrance exams. But before we begin this video, don't forget to hit the like button and subscribe to MMSA for more study about content like this. Chalo bhai, now let's start the comparison. Okay, now let's start with which educational background is suitable for both the degrees. See, if you have a business related background, like if you have completed your graduation in business related degree, then MBA becomes the apt choice for you. And if you have a tech background and you are lacking work experience, then masters in engineering management becomes a really good option for you. Management or leadership roles में transition के साथ you will get opportunities to sharpen your skills in areas like project management, team leadership, communication, strategic thinking and decision making. चल भाई मुझे लगता है इसमें कोई हार जीत का तो concept नहीं है because it depends on the individual's career choice. Yeah, so now let's discuss about salaries and tuition fees. See, if you're targeting an MBA, then you can easily make around $150,000 yearly. और अगर मैं investment banker की बात करूँ तो उनकी starting salary ही over $200,000 होती है. इसके अलावा भी marketing और operations में job roles रहते हैं. वहाँ भी easily $160,000 to $180,000 तक की सैलरी जाती है. ठीक है भाई, इतने बड़े बड़े नंबर्स बोल दिए तूने, बट ट्यूशन फीस भी तो ज्यादा होती है MBA की. तो भाई वर्थ इट भी तो है, इसमें क्या हो गया? Average MBA tuition fees abroad is $96,000. On the other hand, MEM is just $68,000. तो भाई उस हिसाब से तेरी सैलरीज भी तो कम है. अरे भाई सुन तो ले, इतनी भी कम नहीं है. MEM graduates की average salary around $110,000 रहती है. So you are comparing 180 with 110. ROI. जो बात सच है वो सच है भाई. मानना कि तो अफोर्डेबल है. आई प्रोवाइड हायर पेइंग जॉब्स. ठीक है भाई, ये पॉइंट तेरा हुआ. चल भाई ट्यूशन और सैलरी का तो सॉर्ट हो गया. अब भाई एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बात कर लेते हैं. भाई कर लेते हैं डिस्कस, बट उससे पहले मेरे को ऑडियंस को कुछ बताना है. तो भाई देखो, हर बार ही बताना अच्छा नहीं लगता. ठीक है, कुछ ज्यादा ही फायदा हो जाएगा इन लोगों लोगों का. फायदा कराने के लिए बैठे हैं हम. If you guys are planning to study abroad at any of the top B schools abroad, then book a free 20-minute study session with our experts where they'll help you in an entire admission process, which includes shortlisting the best degrees, writing your essays, SOPs, LORs, and providing you a personalized list of schools that you can target, along with the GMAT resources and scholarships as well. The link is in the description box below. यार मैंने ना कुछ stats देखे थे अभी कुछ दिन पहले. The official website of GMAT suggests that 2 lakh students take the GMAT and only 50 to 60% of them are able to score 650 plus. And मुझे ये भी पता है कि most top MBA colleges के लिए you need to have at least 690. इतना तो पता है भाई मुझे. दिक्कत क्या है इस चीज में? I don't understand. भाई दिक्कत नहीं है, MEM ग्रेजुएट्स को इस केस में एडवांटेज है क्योंकि ब्रो अगर MEM टॉप कॉलेजेस की बात करें तो यू कैन इजीली गेट GMAT और GRE वेवर. चल ठीक है, यहाँ पे तो तू जीत गया, बट यू नो हु इज गोना विन इन द टॉप रिक्रूटर्स वाला पॉइंट. ओके, दिस इज प्री डिसाइडेड बट लेट्स गो ऑन. चलो अब जॉब रोल्स और रिक्रूटर्स की बात कर लेते हैं. भाई देख, पहले तो ये समझ ले कि या तो MEM हो या MBA, दोनों ही एलीट लेवल कोर्सेज है, तो रिक्रूटर्स जॉब रोल्स दोनों केस में अच्छे ही होंगे. अब तो भूलेगा ही भाई. MBA graduates can pursue a wide range of job roles, that too across various domains. Based on the latest surveys, 35% of MBA grads choose either consulting or finance, जहाँ पे salary prospects are very high. And apart from this, you can get into marketing, operations. Basically, all business related domains are open to MBA grads. और अगर top recruiters की बात करें तो as an MBA graduate, you'll be working with world's top companies like JP Morgan, Goldman Sachs, Walmart, Apple, Microsoft, Amazon. The list is literally endless. ठीक है भाई, थोड़ा पानी पी ले, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. यहाँ पे भी n number of job roles available हैं. Engineering manager, product manager, project manager,
business analyst, supply chain manager, technical program manager, and you will be working for companies like Johnson & Johnson, IBM, Google, Microsoft, Apple, and many more. भाई जॉब रोल्स और रिक्रूटर्स के मामले में भी बराबर ही लग रहे हैं वैसे, सच बताऊं तो दोनों। हाँ यार, मुझे लगा नहीं था कि इतना क्लोज होगा। तो चलो अब टॉप 20 स्कूल वगैरह की बात कर लेते हैं। हाँ, and I bet you cannot even name 5 of them. 5 की बात कर रहे हैं, मैं 6 बताऊंगा और 10 की लिस्ट भी दूंगा उन्हें। Okay bro, देख। नंबर 1 इज कोलंबिया, वॉर्टन, NYU Stern, INSEAD, HEC Paris, Oxford, Imperial, and बाकी 10 की लिस्ट तुम्हारी स्क्रीन पे है। Nice. Okay. Now top वेट, पहले मेरे को तो बेट करने थे। आई थिंक तू 6 से ऊपर नहीं जा पाएगा। बताता हूँ भाई। And for MEM, the top colleges are New York University, Columbia University, McKim School of Business, USC Marshall, University of Illinois, Urbana-Champaign. ये तो 5 हुई भाई। ठीक है भाई, बाकी 10 की लिस्ट ये है। आई गेस काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, Yeah, तो भाई। रैप अप कर लेते हैं। Okay. चलो ठीक है। But before wrapping up, I have a word of caution for all of you. Remember, choosing your MBA or MEM isn't just about following the money or the prestige. It's about where your interests and skills can be best applied to. And after watching this video, now you know what all is important, so you can decide for yourself whether an MBA or MEM is the better fit for you. And if you have any other questions, just leave them in the comment section below. And if you like this video, just give it a thumbs up and subscribe to MIMSA for more content. But if you're still confused about which degree, country, or school will be a better choice for you, then I would strongly suggest you that you go ahead and book a free 20-minute consulting session. You can find the link in the description box below. Bye. Bye guys.